Hello everyone, welcome to the 7th lecture. Hi, my name is Nishant. Today we will continue with parts of speech with the adjectives जो थे degrees of comparison के बारे में. We will continue regarding that. Okay, it is very simple. Degrees of comparison जो होते हैं बहुत simple होते हैं. There are many words you can make sentences with that. ठीक है, there are some words you will have to add in between. छोटे छोटे words होते हैं, small words you will have to add in between to know that, and it is very easy to know, right? Degrees of comparison is one of the most easiest topics what I feel. Okay, जैसे यहाँ पे ही आप पिक्चर में देखे होंगे, in the first picture there is Earth, there is Saturn and there is Sun. दोनों तीनों different I mean according to those sizes it is, right? One is a small, one is a larger planet, one is more larger than the other one, and the one is the biggest one, it's a star, right? So ये जो हो जाता है ये degrees of comparison रहता है. We'll discuss regarding them. And before that, I hope आपने previous जो भी parts of speech थे, you are practicing regarding that. ठीक है, कुछ नहीं है. What we have discussed right now are the parts of speech from the starting. You can look back to the previous videos of mine, right? जो हम लोग nouns और pronouns और adjectives के बारे में किए हैं. There are all simple things, very simple. You can just look back to that also. Let's move forward now. Yeah. Okay. Yes. Let's move to the next slide here. Yes. याद रखिएगा, learning English is not a sprint but a marathon. ठीक है. English language, in fact, any language what you learn is not like a sprint. एक ही बार में सीख लेंगे ऐसा नहीं होगा. It will take lot of practice, lot of effort, and it will keep going on again and again. And it is for a longer run. It's not for a short 9-second sprint. It is for an hour, for years. For years people practice English and still sometimes they do not become completely proficient. But ये है कि practice करते रहेंगे, still will be learning few things there, right? It's a long run. Okay, चलिए एक proverb के साथ we will continue with the next one. Yeah, हाँ, there was one small homework what I gave you in the last class for the adjectives there. मैंने आपको कुछ suffixes के बारे में पूछा था there, with full, with few other words there. I hope you have done that. I also have brought some words here, simple words they are. उनके साथ थोड़ा देखते हैं what is those words. ठीक है, yeah. If you have done it, great. If you have not done it also, you can just look at these words here. That is also fine. Okay, now this was the homework what I gave you in the last one. Suffixes, ये word के साथ अगर आप जोड़ते थे, that could be those words what were there, with full, with us, OUS, with Y, with less, and with able, right? There were some more. There are many words जो हम लोग last में add करके we can make it an adjective, but these are some simple words here. ठीक है, you can just read one of them. आप एक moment लेकर के आप अपने से भी पढ़ सकते हैं. You can just pause the video and read these words. After that, मैं भी इसे पढ़ूंगा. There are some sentences after this. We can discuss regarding them also. Right? You can pause the video and just read those words if you can. Yeah. So, with full, successful, useful, beautiful, powerful, careful, wonderful, helpful. Okay, ये सब words हो जाते हैं with full. ठीक है, डोंट वरी, ये वर्ड्स बहुत सिंपल हैं. ब्यूटीफुल तो सुंदर तर, केयरफुल वेरी केयरफुली यू आर डूइंग समथिंग, बहुत सावधानी से आप कर. वंडरफुल बहुत बहुत अच्छा है, अद्भुत है. व्हाट यू से. हेल्पफुल, कहीं से थोड़ा सा हेल्प हो गया, दैट इज एन हेल्पफुल बुक, व्हाट यू कैन से. तो आई मीन इट्स यूजफुल दैट, व्हाट यू कैन से, हेल्पफुल हो जाता है. सक्सेसफुल, आई थिंक यू नो, यूजफुल भी तो बहुत सिंपल वर्ड है दैट. ओके, नेक्स्ट वन विथ OUS, वेरियस, बहुत different things there. Serious, yes, serious. Okay, previous, पहले, right? Previous classes, what I say, right? Previous classes, पहले के classes जो हैं, right? Religious, ठीक है, बहुत धार्मिक है. Unconscious, right? Unconscious, होश नहीं होना, right? Dangerous, risky, what you can say, enormous, बड़ा, big, right? These are some words. You know, ये वर्ड्स जो है ना, कुछ वर्ड्स के साथ जैसे अनकॉन्शियस जो मैं लिखा हूँ, ये एक्चुअली 3 वर्ड कंबाइन करके बना, 3 सिलेबल जो बोलते हैं, तोड़ेंगे आप कोई भी शब्द को 3 भाग में, तो 3 सिलेबल्स के साथ आप इसे बात कर सकते हैं. सो
कॉन्शियस जो हो जाता है होश में रहना, व्हाट वी से, अनकॉन्शियस होश में नहीं रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ओ यू एस भी एक सिलेबल है, अन भी एक सिलेबल है, और कॉन एक कॉन्शियस एक और एक सिलेबल, 3 सिलेबल वर्ड हो जाता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन से। ओके, नेक्स्ट वन विथ वाई, रियली, probably, actually, usually, simply, clearly, finally, highly, ठीक है। ये बहुत अच्छे एडजेक्टिव्स की तरह आप बात कर सकते हैं हियर, ठीक है। आई हाईली रिकमेंड यू सी दिस बुक, मैं बहुत अच्छा से ये रिकमेंड कर रहा हूँ आप ये किताब देखें। दैट वे इट इज सिंपल, सिंपली, नहीं सिंपल, simply, it's simply easy. Okay, it's simply easy. English is simply easy, you can say that way also, but not exactly right. But these are some words with why, really, probably, usually, actually, clearly, these are some. Okay, next with less, endless, useless, homeless, helpless, hopeless, meaningless, harmless, ठीक है। एंडलेस, कभी एंड नहीं हो रहा, यूजलेस, उसका कोई यूज नहीं है, होमलेस, ना घर, हेल्पलेस, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, राइट, होपलेस, होप नहीं है उसमें, मीनिंगलेस, कोई मीनिंग ही नहीं है उसमें, हार्मलेस, कुछ चोट नहीं पहुंचाने वाला, राइट, एबल के साथ कुछ वर्ड्स है, अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल, केपेबल, इनकेपेबल, अवेलेबल, अनअवेलेबल, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। ये मैंने ना यहाँ पे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं विच आर द ऑपोजिट्स ऑल्सो, राइट, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, आई एम अनकंफर्टेबल सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे ठीक उतना कंफर्टेबल ही नहीं बैठा हूँ, ठीक है। कंफर्टेबल, आई एम सिटिंग कंफर्टेबली हियर। केपेबल, आई एम केपेबल ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम इनकेपेबल ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, मैं केपेबल नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है नए काम सीखने के लिए, ठीक है। मैं केपेबल, मैं सीख सकता हूँ और नए चीज़, केपेबल। Like for example, you all are capable of learning English, right? ठीक है, या available है, unavailable, acceptable, unacceptable, ठीक है। acceptable, हाँ, कर किया जा सकता है, कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। unacceptable, this is unacceptable, we cannot accept this, ऐसे भी कह सकता है। Okay, these were some words. In the next slide, there are some sentences. यही words के basis में कुछ sentences थोड़े से difficult हो सकते हैं. What you have to do in that, in those sentences is find out these words. ठीक है, वो underline कर सकता है. Some of those words you can see that you can write those sentences which are easy, or else you can just write the word. You can understand from that meaning also. ठीक है, चलिए let's move forward. Sometimes those words are not an adjective, it can also be a noun or some other part of speech, वैसा भी हो सकता है. Fine, चलिए let's move forward. Now these are those sentences. Neha is a successful accountant. She has a beautiful watch. India is a powerful nation. The Three Musketeers is a wonderful book. Elephants are enormous animals. We have a serious problem. Durga Prasad fell unconscious in the assembly. Okay. Riding a bike without helmet is a dangerous act. Arvind saw many homeless people on the street. This is a meaningless question. I am capable of doing this. Not practicing is unacceptable, right? Adya was unavailable for the meeting, right? आप लोग एक बार ये sentences देख लीजिएगा. You can just underline them, whatever is an adjective there. Some there are not an adjective. याद रखिएगा what are adjectives. There should be a noun after that. Then only it will be an adjective. Try them, try them. Okay, take a moment. एक बार try them. After that, I'll tell you regarding them. Pause करते, you can just pause the video and see that. Okay, it's fine, we can also discuss in this way, right? The first one here, एक adjective हो जा रहा है, which is telling the noun accountant over here, and next one, beautiful, it is telling about the watch, which is the noun. Powerful nation, okay, wonderful book, enormous animal, serious problem. Now unconscious here is not that, okay, there is no noun after that, right? Well, unconscious. Right, now this one, riding a bike without a helmet is a dangerous act. Yes, dangerous act. Okay.
Arvind saw many homeless people. Homeless people. This is a meaningless question. I am capable of doing this. Now, in this one, there is not. Although this is a word which suffix के साथ हम लोग बात करते हैं, it's right, but it's not an adjective, a proper adjective over here. Not practicing is unacceptable. Nadia was unavailable for the meeting. These are some of them. Okay, some of these sentences. आप ना यहाँ पे try to change those subjects and try to change those objects also. ठीक है, ये जो object है ये सब आप try करिएगा change करके बताने का. ठीक है, नेहा is a successful accountant. Nishant is a successful teacher. You can say it that way. Okay, she has a beautiful watch. He has a beautiful dress. That way. Okay, try to find out, try to frame some sentences. ठीक है, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं. इंडिया इज अ पावरफुल नेशन. यू कैन चेंज दैट समवेयर. ठीक है, आई एम अ पावरफुल मैन. यू कैन से दैट. ठीक है, these all what you can do for changing those sentences and frame it on your way. अपने आप से try करिएगा to change them. You will be able to do that. Okay, elephants are enormous animals. Rats are smaller animals. That way. Small animals. ठीक है, enormous, small. ठीक है, that is how you can do. Change those words. Even adjectives जो है उन्हें change करके देखिएगा. Use these sentences and change them. That way you will be learning them. Okay, try करिएगा to do that in English. Right? Don't try to change that in Hindi and do that in English only. गलत होगा तो it's fine. You will be learning that. Okay, ऐसा this word we can change it in this way. Right? Please do this. Okay. चलिए फिर आज का टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं. We took a lot of time regarding the homework because there were some things we had to discuss. Yes. चलिए let's start with degrees of comparison. It's a very easy topic and very simple one. Okay, you will know regarding many words here, although there are thousands of words regarding degrees of comparison. बहुत हर एक there are thousands of degrees of comparison, but we will only discuss few of them which are common, right? चलिए let's move forward. Degrees of comparison. As we know, adjectives are used to describe nouns and pronouns. Obviously, हम लोग ने last class में सीखा था कि adjectives वही words हो जाते हैं nouns और pronouns को describe करने के लिए, right? Now, however, degrees of comparison is used when comparing a person or an other thing with another. ठीक है, कोई एक चीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. यहाँ पे देखिएगा इन दिस पिक्चर. ओके, प्रिंस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. ठीक है, प्रिंस एक ताकतवर लड़का है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉय, राइट. इब्राहिम इज स्ट्रॉन्गर दैन प्रिंस. यश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, प्रिंस ताकतवर लड़का है, इब्राहिम प्रिंस से ज्यादा ताकतवर है, यश तीनों से ज्यादा ताकतवर है. ये हो जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. बहुत आसान है ना. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, दीज आर ऑल द डिग्रीज. लेकिन हर एक ये का हमको बात करना पड़ता है. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग? दैट इज वी हैव एन पर्टिकुलर वर्ड व्हिच इज नोन एज अ पॉजिटिव डिग्री. स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री हो जाता है. नाउ इब्राहिम और प्रिंस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. दैट स्ट्रॉन्गर इज अ कंपैरेटिव डिग्री. यश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ताकतवर है. इट इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री. Okay, so ये हम लोग को जानना पड़ता है. I have a small definition there in the next slide. We can just read that. You can see that there are some words, some sentences after that also. चलिए, let's move forward then. Yeah. Okay. We are not told how. हाँ, in this and positive degree वो ताकतवर है, लेकिन कितना ताकतवर है वो पता नहीं चल रहा है हमें. ठीक है, Prince there in the first this one we have seen Prince is a strong boy, लेकिन कितना ताकतवर है that we do not know. Right, he's just strong, right? So उसे हम positive degree कहते हैं. That is a positive degree. Now the word stronger is the comparative degree. वहाँ पे you are comparing between two things. That's why it's a comparative degree. जैसा मैंने कहा तो वहाँ पे okay, Ibrahim and Prince they both are stronger. ठीक है, I mean Ibrahim is stronger than Prince. That's what. Okay, that is the comparative degree there. Okay, the word stronger is the superlative degree. Strongest, sorry. Strongest, वो superlative degree हो जाता है, which denotes the highest degree of quality and is used for more than 2 or more people. ठीक है, वो दो या तीन लोगों से ज्यादा जब होता है, then we say it as superlative degree. Okay, I hope आप लोग को समझ में आया. Positive degree, comparative degree and superlative degree. These are 3. Okay, abhi after this we'll have
many words what we'll have to discuss, right? एक एक का हम लोग डिस्कस करेंगे. It's very easy, very simple what we can do it. Okay, चलिए let's move forward. Okay, यहाँ पे हर एक वर्ड का ना अलग अलग डिग्री फॉर्म करने का रूल आ जाता है. ठीक है, एवरी वर्ड विल हैव दैट वे. यहाँ देखिएगा, ये वर्ड्स के साथ जब भी हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सफिक्स, ओके, सफिक्स ऐड करते हैं with the comparative degree ER and with the superlative degree EST. ठीक है, हर एक वर्ड का अलग अलग होता है. दैट इज जस्ट द रूल व्हाट यू कैन से. द वर्ड का साउंड के हिसाब से होता है. देयर आर डिफरेंट रूल्स देयर, बट यू डोंट नीड टू गो इनटू दोस डेप्थ्स हियर. ठीक है, इतना ही जानने से काफी है. लेट्स रीड आउट ऑल द वर्ड्स देयर. ओके, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ठीक है, छोटा, छोटा और सबसे छोटा, दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो छोटा है, दैट यू विल कॉल इट अ स्मॉलर. टू कंपैरिजंस देयर. एंड व्हिच इज द स्मॉलेस्ट? सबसे छोटा, what you can say. Kind, kinder, kindest. Dark, darker, darkest. Quiet, quieter, quietest. Bright, brighter, brightest. Long, longer, longest. High, higher, highest. The highest peak is in the Himalayas. My building is higher than compared to other buildings. This building has a good height. ठीक है, this way you can tell. The longest distance is, कुछ भी, you can tell it that way. The longest distance is from the longest distance I have ran is 4 kilometers, you can say that way. Okay, the long, longer, longest, that way. When you're comparing, जब आप compare कर रहे हैं किसी के साथ, this pen is longer than the other one. If you can see, this pen is longer than the other one. ऐसे आप कह सकते हैं. Okay, today it is one of the brightest day outside. Okay. Yesterday was brighter than today. The was for अंधेरा, right? It is bright outside, right? This way. Yeah. अब यहाँ पे what you can do, you can even add a negative form also. It is not quite outside. It is not quieter. It is, you can put even not in between, but not, will not confuse. अभी इसके बारे में नहीं बात करेंगे. We'll talk about that later. But I hope ये समझ में आया regarding these words. Okay, small, smaller, smallest, where we are talking about some words which you can just add a suffix. एक suffix add करने से that will become the comparative, and superlative के साथ est. Okay, these are the first category. Okay, where you're simply adding er and est. The next one what we go is with this. We remove that, we just add r and st there. वहाँ पे e पहले से ही होता है, right? White, whiter, whitest. Safe, safer, safest. Noble, nobler, noblest. Large, larger, largest. Close, closer, closest. Brave, braver, bravest. This way. Okay, these are some words. Brave, yes. I've met one of the bravest persons in the world. Okay, he is braver than him. Okay, Ram is braver than Sham. That way you can say. I am brave. That's also Bahadur. What? Brave? Bahadur, I think you know that. Know the meaning of those. Right? Noble, close, safe, fight. These are all simple words, I think. Okay. Let's move forward then. Great. Okay. The next one is regarding the positive degree here, which ends with y. Y के साथ जो end होता है. ठीक है. उसके पहले एक बार, same again, if you remember, nouns में जो हम लोग बात कर रहे थे consonants और vowels, उसी की तरह कुछ rules are there here what we have to focus. Right, now observe here, happy, happier, happiest. ठीक है, there is y over here at the end, and before that there is a consonant. ठीक है, that way what do we do to write in comparative and superlative is that we remove the y हटा देते हैं, उसके place में I डाल देते हैं, and the same thing, er or est we add it. Simple as that, right? Holy, holier, holiest. Noisy, noisier, noisiest. Silly, sillier, silliest. Busy, busier,
busiest. Dirty, dirtier, dirtiest. Wealthy, wealthier, wealthiest. ओके, यू कैन फ्रेम एनी वन ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप बना कर कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन से वन ऑफ द डेज इज द बिजिएस्ट। ओके, नॉट दैट वन ऑफ द डेज विल नॉट बी, आई हैव टू मेंशन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। यस्टरडे वाज द बिजिएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। बहुत बिजी डे था, दैट्स व्हाट यू कैन से। ओके, बिजिएस्ट सुपरलेटिव, ठीक है। टुडे इज बिजियर देन यस्टरडे, आज बहुत बिजी हूँ मैं, ठीक है। Okay, that way you can say dirtier, wealthier. There are many words. The degrees of comparison में हम लोग बैठेंगे तो you can make around 1,000 slides, but we cannot discuss all of those words. ठीक है, कुछ words which are common, कुछ words which are difficult, some words which are easy also. Right? Okay, these were some. Let's move forward then. Great. Here, अभी देखिएगा ये adjectives to form comparative degree and superlative degree of adjectives having single syllable, ठीक है। That's what I was telling, single syllable, single word रहता है, ठीक है, single word रहता है वहाँ पे। Okay, ending with a single consonant, okay, preceding by a vowel, उसके पहले preceding again pre, ठीक है, ये prefix हो जाता है, ठीक है, pre, ठीक है, उसके पहले जी के पहले there is a vowel, ठीक है, ये कंसोनेंट है, उसके पहले एक ववेल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डबल वर्ड लिख करके उसका ई आर और ई एस टी के साथ लिख देते हैं, राइट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर। मैं एक बार आई कैन टेल यू, आई कैन एक्सप्लेन दिस अगेन। ओके, सो दीज आर सम वर्ड्स जहाँ पे सिंगल सिलेबल होता है, उसके पहले एक वो वर्ड के एंड में एक सिंगल कंसोनेंट होता है, उसके पहले जो आ जाता है एक ववेल आ जाएगा। जब भी ऐसा आएगा आप क्या कर सकते हैं कि जो लास्ट वर्ड है, जो कंसोनेंट है, उसको डबल लिख करके ई आर और ई एस टी के साथ लिख देंगे, तो दैट विल बिकम द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सिंपल एज दैट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। देखिएगा, दैट the two words are coming, gg and gg and gg, right? That way. Bet, better, bettest. Sad, sadder, saddest. Hot, hotter, hottest. Thin, thinner, thinnest. There are some more words here also. You can find out. You can do one thing. आप लोग ढूंढ सकते हैं. You can find some more words as homework. What you can do. Okay, that way even you will also find some different words, वो भी आप किया जा सकता है। Please do use your use internet to find these words, or if you have any book or anything, वहाँ से भी you have to take some words. That can be done. Okay, a small homework what we'll write, I'll tell that in the end, but this is so you can remember here. Okay, now these were some of these words where एक सिंगल सिलेबल वाले हो जाता है, जिसका एंड एक कंसोनेंट के साथ होता है, उसके पहले एक वावल आ जाता है, तो दो कंसोनेंट हम लोग लिख करके ई आर एंड ई एस टी के साथ लिख देते हैं। दैट इज सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव, राइट हियर। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ ये वर्ड्स देखिएगा, ये वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इट इज़ वेरी इजी। लिटिल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग थ्री सिलेबल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तीन अलग साउंड्स आ जाते हैं, व्हाट आता है हियर। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, वी यूज डिफरेंट डिग्रीज यहाँ पे, जैसे मोर और मोस्ट का बात किया जाता है, ठीक है। मोर कंपेरेटिव के लिए आ जाता है और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट आ जाता है, राइट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, दो साउंड्स अलग आते हैं यहाँ पे, दैट्स वाई इट्स मोनो से दो सिलेबल के होते हैं या फिर तीन सिलेबल के हो जाता है, ठीक है। एंजॉयएबल, दो सिलेबल, एंजॉयएबल, ठीक है। फॉरगेटफुल, अट्रैक्टिव, एक्टिव, इम्पोर्टेंट, दिस वे। ओके, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, एंजॉयबल, मोर एंजॉयबल, मोस्ट एंजॉयबल, फॉरगेटफुल, मोर फॉरगेटफुल, मोस्ट फॉरगेटफुल, अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है। एक्टिव, मोर एक्टिव, most active, yeah, sorry, my bad. Active, more active, most active. Important, more important, most important, that's way. Okay, so हमने ना जो
वहाँ स्टार्टिंग में एडजेक्टिव्स देखे थे, ठीक है, जो वर्ड्स ऐसे जोड़ के हमने बनाए थे, उन सभी के साथ आप ER या फिर EST नहीं लिख सकते। ओके, उनके साथ आपको मोर और मोस्ट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, मोर मोर रिलीजियस, मोस्ट रिलीजियस, ठीक है। एनीथिंग, ऑल दोज वर्ड्स के साथ मोर और मोस्ट ही आएगा। Okay, I hope you can just watch that एक बार, you can go back and see those words, उसके साथ you can just add these degrees of comparison here, ठीक है। जो भी more और most के साथ आएंगे वही words आप बात करेंगे there। Okay, see, good one। Okay, let's move forward then, ठीक है। इसके बाद तो few things और कुछ और एक कैटेगरी आता है जहाँ पे irregular रहता है, the formation of those comparative and superlative is little different, ठीक है। चलिए, let's move forward here। Okay, some adjectives form their comparatives and superlatives irregular way में आता है, ठीक है। One of the most easiest example here is good। good, gooder and goodest नहीं होता है। मैं बहुत लोगों को दिखा हूँ जो good का gooder goodest बोलता है, ठीक है। Even for bad, bad, badder, baddest कहता है, but that is not that। good, better, best, bad, worse, worst, ठीक है। यहाँ many and much भी एक आ जाएगा, ठीक है। many एक नंबर के लिए हो जाता है। I have many pens, I have more pens than you, I have I have the most pens in the class, ठीक है। that way, okay, नंबर के लिए हो जाता है। much, more, most, quantity here, right। late, यहाँ one thing I will have to tell, okay, I will try to tell in the next slide। Okay, this is one thing what you have to understand regarding late and old। There is one more word, far and further का भी आता है। ये दो word आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। I'll try to explain that in the next one। It's very simple to understand। ऐसा कुछ कोई बड़ा ये नहीं है, it's the most simple thing, ठीक है। late, later, latter, latest and last जो superlative के लिए हो जाता है। old, older, elder, oldest and eldest, ठीक है। अगर आई थिंक you will be able to understand when I tell the words also, ठीक है। but still I'll explain it in the next one here। okay, okay, not this, okay, there is no space here, I'll just do it over here, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, my bad, okay, yeah, later बाद में, ठीक है, and latest new, ठीक है। this, ये दोनों जो हो जाते हैं ये टाइम के लिए हो जाते हैं। these both are for time here, okay। latter and last is for position, ठीक है, position के लिए हो जाता है। I came, the last chapter in this book is very difficult, ठीक है, last, ठीक है। the latter chapter is easy, the next chapter उसके बाद वाला, ठीक है। I will come later, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। I do not have the latest information, I do not have the latest news, टाइम के लिए होता है, ठीक है। लेट एंड लेटेस्ट इज फॉर द टाइम, latter and last is for the position, ठीक है। there is another word over here, old, older and oldest। old can also be written as elder and eldest also, right। older, okay, when you are comparing things or person which is not there in your family। elder or eldest what you talk about, that is regarding people inside your family, राइट। आपके फैमिली के अंदर जो भी लोग होते हैं उनके लिए हम लोग एल्डर एंड एल्डर्स कहेंगे, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर इज 2 years एल्डर देन मी, ठीक है, 2 साल बड़ा है मुझसे। और एल्स यू कैन जस्ट से दिस वे दैट ओके, आई विल स्पीक टू माई एल्डर ब्रदर, दैट वे, राइट। द एल्डेस्ट मेंबर इन माई फैमिली इज 90 years old, ठीक है। ये मेरे फैमिली के अंदर होता है। एल्डर एंड एल्डेस्ट इज फॉर द सेम फैमिली, ओके। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट जो हो जाता है, दैट इज फॉर एनीथिंग इट कैन बी। दिस बिल्डिंग इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन माई सिटी। ये बिल्डिंग जो है बहुत पुराना बिल्डिंग है, वन सबसे पुराना बिल्डिंग है मेरे घर, मेरे सिटी का। दिस बिल्डिंग, ओके, द बिल्डिंग व्हाट आई लिव इन इज ओल्डर दैन द अदर बिल्डिंग बिसाइड इट, ठीक है।
ये हो जाता है। यू कैन इवन से, अगर आप अपने दोस्त लोगों को बात कर रहे हैं उनको भी आप ओल्डर में कह सकते हैं। ओके, लाइक दिस, राइट, यू आर ओल्डर देन मी, आप हैं मुझसे बड़े हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो राइट। ओके, ये सब हो जाता है फॉर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, वन मोर वर्ड व्हाट आई वांटेड टू टेल इज फॉर फार। ओके, फार, farther and further। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दोज स्मॉल वर्ड्स व्हाट आर दैट। ठीक है, एक डिस्टेंस के लिए होता है और एक हो जाता है, कैन यू टेल मी, एडिशन के लिए हो जाता है, फादर एंड फर्दर। आप लोग गेस करके मुझे बता सकते हैं एक कौन सा डिस्टेंस के लिए होता है, कौन सा एडिशन के लिए होता है? यस, यू कैन ट्राई इट राइट नाउ, आई जस्ट गिव यू अ मोमेंट। फाइन, ओके, नॉट अ बिग डील, मैं बता सकता हूँ, इफ यू हैव टोल्ड इट देन इट्स फाइन। फादर जो हो जाता है दैट इज रिगार्डिंग डिस्टेंस। ठीक है, लेट अस वॉक अ लिटिल फादर, थोड़ा और दूर चल लेते हैं, लेट अस वॉक अ लिटिल फादर, लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक फर्दर, जो हम लोग कहते हैं, दैट इज फॉर डिस्टेंस। दिस इज फॉर डिस्टेंस and this one further is for addition। Let's not have no further discussions। हम लोग और कुछ discussions नहीं करेंगे। Let's not have further discussions। नहीं तो let's have further discussions। Positive and negative sentences there। Right, this way। Okay, तो ये ऐसे हो जाएंगे सब। इसका superlative भी farthest and furthest ऐसे आप कह सकते हैं। Farthest, FARTHEST and furthest। I'll just write it down here। थोड़ा सा आई विल हैव टू राइट हियर, मैं ना दूसरे इंक से आई राइट इट विद द डिफरेंट इंक हियर सो दैट इट इज अंडरस्टूड। ओके, लेट मी जस्ट ब्लू कलर ओवर हियर। ठीक है, farther, farthest and furthest। ओके, those are things। आई होप आप लोग को समझ में आया रिगार्डिंग दीज वर्ड्स। यहाँ पे कुछ समझने वाली बात नहीं है ज़्यादा, हियर देर आर मोर रिगार्डिंग अंडर, आई मीन नोइंग दोज वर्ड्स। ये वर्ड्स याद रहने वाली वर्ड्स है, राइट। अगर आप इसको यूज करते हैं यूजिंग इन सेंटेंसेस, यू कैन फ्रेम ब्यूटिफुल वर्ड्स, ब्यूटिफुल सेंटेंसेस विद दिस। ठीक है, आई आई गॉट बेटर मार्क्स दैन माई ब्रदर, माई ब्रदर इज वन ऑफ द बेस्ट cooks in the house। ठीक है, that's way you can tell। I'm not the worst cook, but yeah, I'm not that bad also। ठीक है, that way you can tell। Okay, let's move forward then। ठीक है, let's move forward। I have got some pictures here। आप लोग, this is a picture regarding Tom, Jerry and an elephant। ठीक है, one is a small of size, one is little bigger। ठीक है, one is the biggest। You can frame some sentences here। ठीक है, you can say like this। Okay, Jerry is a small mouse। Okay, Tom is a big cat। Okay, ये this is a movie regarding regarding Jumbo। उसका एक बड़ा wings होता, big ears होते हैं। ठीक है, Jumbo is an elephant which can fly। ठीक है, we'll call Jumbo elephant का नाम अभी Jumbo करके रखते हैं। Jumbo is a big elephant। ठीक है, और इस Jumbo is an enormous elephant भी कह सकते हैं that way, or a bigger elephant or the biggest elephant, that way also you can say Jumbo is the biggest elephant। This way you can frame some sentences like this। Okay, I've got one more picture in the next one। Okay, you can see in that picture that and tell me which is small, which is big and which is the biggest that, right? ऐसे you can compare। See, आप practice करने के लिए to know, you can sit and see things around you। जो कौन सा चीज़ छोटा है, कौन सा चीज़ बड़ा है, कौन सा which thing is bigger। ठीक है, look at that and you can tell। बाकी ये जो helping verbs and articles जो आते हैं बीच में, that we learn about that, but
सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का अगर आइडिया आ जाता है देन दैट इज ग्रेट. ओके, आप लोग, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक और पिक्चर रहता है, आई गिव यू अ मोमेंट, यू कैन जस्ट पॉज इट. सेम लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, सेम लाइक दैट you also need to frame one sentence there. Yeah, please do try. Yeah, you can try this. There are 3 pictures here. It is regarding planes. Okay, one is a 2-seater plane, one is more than 2 people can go inside that, one more than, I don't know, in that I think more than 100 people can get inside. Okay, that is a big cargo plane there. Okay, आप लोग try करिएगा to frame this. This is fun. I will give you as an homework. Okay, you try to look at this picture, you can pause the video, take a screenshot or kuch bhi like that, write 2, 3, 1 sentence looking at that. You can, I can give you a solution also here, but please do try. Pause the video and then do try this. Okay, great. ये हो जाएगा. I can tell the answer right now. Okay, this plane is a small plane. Okay, it's a two-seater small plane. 2 seat वाला small plane है ये. The second picture, it's a big plane, right? It can take 5 to 10 people there. This plane is the biggest plane in the world, ऐसे आप कह सकते हैं. This is the biggest plane in the world. The last one, the third one. Okay, like this you can frame some sentences. I know, try करिएगा. You can see some objects also in front of you. There you can do that. Okay, these were few things regarding degrees of comparison. I have got one small worksheet here after this. It's exactly not like a worksheet, but these are some fill in the blanks and some sentences जहाँ आपको समझना पड़ेगा what kind of degree is that. Okay, with this I think degrees of comparison will be over. There will be one small thing what I have to tell you after this is how to change from an positive degree to a superlative degree or to a comparative degree. That is one thing what I'll have to tell you. Okay, we'll try, we'll see after this how it goes. चलिए, this are some questions. आप लोग please pause करिएगा, pause the video and try to watch regarding them. I hope you are able to hear me. Yeah, just give me a moment. Yeah, okay, yes. Okay, fill in the blanks, these ones. Here fill in the blanks hai. Please try to fill them. You can pause the video and just see through those words and sentences there. Okay, that will be great. Yeah. Okay, let's quickly complete this. This is the dash problem of the exercise. Difficult. Okay, difficult क्या था? There were some words मैंने आपको कहा था difficult एक 2 syllable वाला word होता है तो yeah. And now how do you know it's a superlative or an comparative? वो भी एक चीज हो जाएगा there. See, observe those sentences. जहाँ पे भी the आता है ना, wherever you find the, ठीक है, it is always in superlative degree. वहाँ पे हम compare नहीं कर रहे. We are not comparing anything there. Article the comes, it is always in superlative. Okay, हमेशा वो superlative में होता है. ठीक है, that's why this is the most difficult problem of the exercise. Next one, ये वाला try करिएगा. Which of the 3 boys is the dash? If you have guessed superlative, if you have told superlative, exactly superlative है ये. Which of the boys, 3 boys, is the tallest? Okay, now the third one. This is the dash joke I have ever heard. Again, the यहाँ है. There is an article the. ठीक है? So that's why this is in superlative. This is the funniest joke I have ever heard. ठीक है, अभी next वाला sentence देखिएगा here. Okay, he was dash than any other man. Dan. जब भी word Dan आ जाता है, हम लोग we are comparing 2 things here. ठीक है, that's why it is for a comparative degree. ठीक है, comparative degree के लिए हो जाता है. He was stronger than any other man. ठीक है, stronger.
There is no animal, no, there is no animal dash than a tiger. Ferocious. Yes, same thing. It is like a two-syllable word here. Okay, more ferocious. More ferocious. Okay, lead is the dash of all metal. Please try. This is again in superlative. This comparative tha. This is again in superlative. Okay, that is lead is the heaviest of all the metals. He was dash than other boy in the class. Okay, now again comparative. There is than over here. Cleverer. Okay, he was cleverer than any other boy in the class. Okay, next one. Tina was the dash of the three girls. ओके यहाँ पे आप बता सकते हैं एल्डर एंड ओल्डर का मैं इसलिए यहाँ पे बताया था नाउ टीना इज नॉट इन योर फैमिली ठीक है सो व्हाट विल दैट बी इज इट अ कंपैरेटिव और एन सुपरलेटिव दैट यू हैव टू सी यू हैव टू सी वेदर देयर इज दैन नहीं तो द आ रहा है द आ रहा है हियर राइट सो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है तो टीना इज द ओल्डेस्ट of the three girls. Is honey dash than candy? What can it be? Comparative than sweeter. It was the dash moment of my life. Proud. ठीक है? Is it comparative or superlative? Come superlative. The. ठीक है? Proudest. Okay. I hope आपने ये अच्छा से किया there. What you do is यही sentences को आप देखिएगा. Try to change the objects. जैसे he के place में कुछ और नाम लिख दीजिएगा. ठीक है? ऋषभ is stronger than me. ठीक है? ऋषभ is stronger than your name. आप वहाँ पे अपना नाम लेकर के बोल सकते हैं. नहीं तो if your brother is there, कोई भी ऐसे आजू बाजू हैं. ये लड़का मुझसे ज़्यादा ताकतवर है. What you say? The same sentences over here. ठीक है? There is no animal more ferocious than tiger. Yes, exactly. There is no person more heavier than me. That also you can say that way. Funny sentences frame करिएगा everyone. You can make funny sentences here. But that way also you can learn a lot. Right. चलिए, there is one more activity what I have here. The next one what I have here is what you have to observe here in these sentences and tell the degree. ठीक है? यहाँ पे what you can do, आप एक बार pause कर सकते हैं. You can just pause it over here. Read the sentence. बस एक word लिख दीजिएगा. Okay, first one. Which word is there? Is it there in that? It's there in that is the degree of comparison. And उसके पास कौन सा degree है? Put a dash and write that way. एक example, the first one I tell. ठीक है? May is the hottest month of the year. So you can put like this, hottest. ठीक है? And कौन सा degree है ये? Superlative? Yes, superlative. This way you can tell. Okay, the first one I have done it for you. Second wala say up, you can try that. Okay, look at those words there and tell me what degree are there. You can pause the video, take a moment and do that. Meanwhile, I'll wait for a second. Uske baad I'll tell those answers. Okay, great. Ria is my elder sister. Yeah, elder. But यहाँ पे we are not using a comparative degree. We are not using than or anything here. Okay, but still it is a comparative degree. Ria is my elder sister. Right? Comparative degree here. Can you point me towards the nearest phone booth? Okay, nearest phone booth. There we give you nearest जो हो जाता है. What is called over here is okay. It is a superlative degree here. Okay, this is the oldest church in our city. Oldest superlative degree. The most boys were in the playground. Although in this one there is nothing here. This sentence is not required. Okay, Shakespeare is the greatest, is greater than any other dramatist. Greater than. Okay, comparative. Sita is more popular than all the other girls in the school. More popular than, comparative.
Taj Mahal is the most beautiful monument in the country. Most beautiful. Superlative. Okay, I'm not writing it properly. Comparative. Okay, superlative. Shimla is cooler than Delhi. Okay, comparative. Kolkata is one of the biggest cities in India. Biggest. Okay, superlative. Geeta is the best student in this group. Best. Okay, superlative. He is cleverer than his sister. Cleverer than. Okay, comparative. Ostrich is the biggest bird. Okay, that is superlative. Okay, this way there are some words what you can see. You can also frame some sentences like this. इन्हीं को देख करके try to frame some sentences what you can do. Okay, these are some. Okay. Yes, please do try all of these. I hope आप लोग you can change those subjects and frame that. Good one, right? Please do watch the other session also. जो level 2 का session जो चल रहा है वो भी observe करिएगा. The place sir is taking regarding that. Please do watch that also. Those are quite interesting. You never know, you might learn something new, right? That will be it, everyone, for today. In the next class, we will start with articles. Articles is also one small topic there, but there are different ways of knowing that. Okay, यहाँ पे भी we have learned some articles, the what you have understood here regarding the superlative degree. Okay, thank you everyone. We'll meet again in the next class. Thank you. Yeah, that will be it.